Assalamu alaikum. Okay. I have got 20 minutes, I guess, right? Is that okay, Sohail? Okay. Assalamu alaikum, everybody. मुझे जब invitation आई थी इस conference की, तो my first question with Dr. Zaki was कि मेरी audience कौन है? Because I generally want to know कि आप लोग का background क्या है, because I know I've spent many years in dental research, I've presented in IADR and all over the world. लेकिन पाकिस्तान के अंदर IADR started a couple of years ago, but this particular conference is probably more towards clinician. Am I right? You guys are all clinicians? Clinicians? Raise your hands. I want to see your hands. आप लोग clinicians हैं सारे? How many of you guys do research? Research में कौन है? Okay, so couple of them in the front are the research. That's great. And बाकी आप लोग सारे students हैं या आप लोग की already practices मौजूद हैं? Practice मौजूद है आप लोग की? सारे students हैं? How many of you guys are students? ये हमारे साथ भी होता था. Conference के hall में लाके हमें बुला के बिठा देते थे. But that's good. I mean, since you guys are here, so might as well make use of it, because कोई आप लोग कुछ काम की बात सीख लेंगे. The word modern से क्या मुराद है? What is modern? Louder. या इनको माइक दें किसी को अगर किसी को बात करनी. Modern से क्या मुराद होती है? Any idea? All right, let's look at the definition, okay? So a modern says relating to present or recent times as opposed to remote past. What does that mean? So how is 2024 is different than 2023, and how is 2023 different than 2022? Am I right? So 24 के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से we are actually talking about, जैसे डॉक्टर मधा ने अभी, he talked about digital dentistry. So I've worked, I know his office, he's a good friend of mine, we're batchmates. So मैं शिकागो में जब गया, when I actually saw the practice, I realized few things. I mean, American dentistry is even far beyond the European and the Japanese and the Southeast Asian, and not to mention Pakistan. तो modern dentistry के अंदर क्या फ़र्क है? What do you guys think? क्या हो रहा है dentistry के अंदर? There is one thing very important what Dr. Madha said in the end. That was, there is a great efficiencies, right? That means अगर आप लोग अपनी efficiencies कैसे बढ़ा सकते हैं, right? That's number one. Health outcomes कैसे बढ़ा सकते हैं? How can you create your patient experience कैसे आप बढ़ा सकते हैं? तो modern dentistry is all about improving effectiveness and efficiencies, all right, in a simple word. And when we talk about the modern dentistry, what is something interesting is advanced technologies. So technology, so you see all amazing scanners, 3D printers, intraoral scanners. So these are all becoming a reality. That means in the next 5 years, अभी आप लोग के dental school में intraoral scanner आ चुका है? नहीं आया है? नहीं आया है? अभी भी alginate इस्तेमाल कर रहे हैं? All right. So that's fine. So we are in the midst of transition. हम transition के अंदर हैं. And I want to tell you exactly the cost of it as well by the end of it, why, how is it born. So the problem क्या है? Right? Let's look at the problem. What is the biggest problem you guys are facing right now? बहुत सारे problems हैं पाकिस्तान में, I know. लेकिन dentistry के अंदर सबसे बड़ा problem क्या है? So in my experience, after working in different parts of the world, I realized there is one big experience, that is one big problem. And that is, and again I'm talking from a clinical point of view, that is the patient experience. Dr. Naveed को मैं सुन रहा था, and he spoke beautifully about why pain-free dentistry is so important. Like he really emphasized, pain, ये इस्तेमाल कर लें, ये इस्तेमाल कर लें, ये, लेकिन क्यों? Because जब आपका पेशेंट जब घर जाएगा तो क्या बोलेगा? इस डॉक्टर के पास चले जाना, दर्द नहीं होता. बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है. But it's extremely important, and now in the modern dentistry, pain-free dentistry is now a standard of care. Am I right, Dr. Naveed? Sir, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है. Patient experience, अगर पेशेंट को पेन होगा, इसका मतलब है कि आपका गेम ऑफ है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़,
ये आपके सामने दो पेशेंट, एक तो आपका क्लिनिक नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक आपका ये लाउंज नज़र आ रहा है. What do you think when you look at it? So imagine you're a patient, you go inside this lounge. What is your patient experience? हम यहाँ पे बैठे हुए थे भी डॉक्टर कहते गर्मी है, एक्सपीरियंस कैसा है? Are you guys enjoying yourselves? Nah. ये इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगाई हैं, मुंह पे गर्मी हुई हुई है. सो एक्सपीरियंस जो है ना इंसान का, वो आप चेंज नहीं कर सकते. वो एक्सपीरियंस अपनी जगह पे होता है. तो हम लोग कभी कभार डेंटिस्ट्री के अंदर इतना अंदर चले जाते हैं कि नोबडी टॉक्स अबाउट इट. बिकॉज लेकिन दुनिया जो है, अगर आप एप्पल के शोरूम पे गए कभी, इफ़ यू गाइस हैव विजिटेड एन एप्पल शोरूम इन द वर्ल्ड, वाइट, ब्यूटिफुल, ग्रे, स्लीक. एप्पल की वेबसाइट देखी है, टेस्ला की वेबसाइट देखी है आप लोग ने? व्हाट इज द एक्सपीरियंस? The experience is wow. So why are we not as dentists taking care of it? So I know that in America, even in England, when I used to go, वहाँ पे मेरा जो experience है work, they are moving into dental wellness, they are moving into dental spas. They are talking about how can we give a holistic experience? How can we create aesthetics? How can we create smile? How can we create, how can we interact with our patients? ताकि आपका patient आपके साथ hook कर जाए. So that is something very important. I want you guys to remember, because कल आप लोग ने clinics खोलनी है. So think about these things. What kind of colors do you want to use? Do you want to put these blue sofas? Maybe not, right? तो ये important है. I mean, मैं आप लोग के, I'm trying to like make it very simple and easy. So और एक और जो चीज़ है बहुत important है कि इंसान जो होता है ना, जब तरक्की कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उसमें ईगो बहुत आ जाती है. तो बोलते हैं जी मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढमाका हूँ. बट एक्चुअली इन रियलिटी इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इन द एंड इज द पेशेंट, ऑफ हाउ दैट पेशेंट परसीव्स यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंट आपके बारे में अच्छी राय रखता है, अगर पेशेंट आपके बारे में एक अच्छा ख्याल रखता है, यूर इन द गेम, because then you are actually taking care of your patient, you're taking care of patient experience. So this is something very important. And when there was a survey, it's very important, your patient's feedback is your biggest asset for your clinic. So modern dentistry, from a very bigger biosphere understanding, it is not just about how well do you do clinically. It is so much about yourself, it's about leadership, it's about your staff. Dr. Madha was talking about the staff training. So it's a comprehensive understanding. You need to have a good team. You need to have a good client interface experience. When your patient gets in touch with you, they need to feel that, yeah, this is the doctor I want to see, right? Next, so this is a paper which got published back in 2020, and it's a mixed model study, and they were looking at how we can improve the dental care. So what are the areas? तो वो कौन से areas हैं जो कि patients feedback जब देते हैं? So if you look at it, ये आप लोग का this has stopped working. Guys, I need help. This stopped working. कहाँ point करना है इसे? So क्या चीज़? यहाँ से? नहीं, I can't change the slides. I think आप लोग ने बैटरी चेंज करनी हो रहा है? Go back. Where do I point? Okay, sorry, got it. So patient experience पे जब हम बात करते हैं, so look at this. What do we look at? So if you look at the patient experience from there, it's extremely rude front desk. Just look at this. बात अभी डेंटिस्ट पे नहीं पहुंची है, ठीक है, बात डेंटिस्ट पे नहीं पहुंची है, लेकिन एक्सट्रीमली रूड फ्रंट डेस्क. तो आपका जो फ्रंट डेस्क है वो आपका पहला पेशेंट का टच पॉइंट है. अगर आपका वो ट्रेंड नहीं है, उसको नहीं पता है कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट कैसे देना है, या पेशेंट को अपॉइंटमेंट 5 बजे का दिया, 5:30 बजे आ रहे हैं लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया. सो ये चीज़ें पेशेंट जो होता है ये एक्सपीरियंस करता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली which basically affects your dental care. Good hands, high pressure, short notice, pain free, painlessness, unnecessary dental, ये सारी की सारी देखिए बहुत important चीज़ें हैं. So and it's not just about clinical dentistry, that's what I'm trying to point out.
सो ये चीज़ें आप लोग की ऑलराइट. सो दैट मीन्स कि 3 चीज़ें मुझे समझ आती हैं आफ्टर लिविंग वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर 3 थिंग्स यू गाइज नीड टू लर्न. अच्छी बात है, आज सीख लें ताकि कल इसको यूज़ कर सकें. पहली चीज़, आप खुद, आपकी पर्सनालिटी. When you stand up and when you talk, you need to have an authority over yourself. You need to have authority of your subject. You need to know what kind of a personality do you have. And you need to define your niche. If you don't know how do you want to position yourself, are you a general dentist, are you endodontist, how do you want to set up your own business, if you want to go into a job, अगर आप job apply करें, resume, big problem. I just hate it. I mean, I read resumes and I'm like, मुझे ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट हुई हुई है, एक ही चीज़ हर बंदा कॉपी कर रहा है, तो मैं क्यों किसको प्रेफरेंस दूंगा, राइट? सही है. इसका मतलब है कि मैं इंटरव्यू में बुला लूँगा आपको, मैं इंटरव्यू करूँगा आपके साथ, मैं इंटरव्यू में आप पे क्या चीज़ देखूँगा, आपकी स्किल्स तो मैंने देखी ही नहीं अभी तक. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद? योर पर्सनैलिटी. और पर्सनालिटी इज़ वन थिंग जो कि हमारे डेंटल स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमारे रोल मॉडल्स होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, राइट? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार योर नीड टू नो योर स्ट्रेंथ्स. जो चीज़ नहीं आती है बिला वजह उसको हाईलाइट नहीं करें, बिकॉज दैट गिव्स अ रॉन्ग एक्सपीरियंस. बिकॉज हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है, हम बता लेते हैं कि कौन किधर खड़ा हुआ है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिकॉज इस फील्ड के अंदर टाइम हो गया. सो वी नो व्हेन समवन इज टॉकिंग इफ ही इज़ बुलशिटिंग और इफ ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट रहें, इंटेग्रिटी के साथ बोलेंगे सर मैंने ये काम मुझे नहीं आता, मुझे ये काम आता है, मुझे ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, ये चीज़ नहीं है. जो अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं डेंटल क्लिनिक के तो डेलीगेट कर दें, खुद नहीं करें, आप किसी और को दे दें. तो ये जो मैनेजमेंट है ये इतनी खूबसूरत साइंस है. एंड आई हैव सीन द बिजनेसेस, आई हैव सीन डेंटल क्लिनिशियंस बिकमिंग अमेजिंग बिजनेसमैन. स्पेशली जो जूस होते हैं ना बड़े ज़बरदस्त होते हैं, तो इनसे भी मैंने सीखा है. लेकिन आई मीन क्योंकि आप हर इंसान से सीखते हैं, तो मैंने इनसे सीखा है. यू नो व्हेन यू मीट गुड डेंटिस्ट यू आर एक्चुअली ऑल्सो मीटिंग अ गुड बिजनेसमैन, क्योंकि उसको समझ है, उसको पता है पेशेंट का ख्याल कैसे करना है, उसको पता है अपने सारे क्लिनिशियन का ख्याल कैसे करना है, उसको पता है अपने टेक्नीशियन का ख्याल कैसे करना है, उसको पता है कम्युनिकेशन कैसे करवानी है. सो ही इज़ रेडी. सो ही इज़ ऑल्सो अ क्लिनिशियन बट ही इज़ ऑल्सो अ बिजनेसमैन. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. रिसर्च. Please don't talk without evidence-based dentistry. What is evidence-based dentistry? That means evidence which is qualified enough to be used. So evidence-based dentistry is now the key. कोई भी बात आप कर रहे हैं किसी भी फोरम के ऊपर, just make sure कि उसकी जो रिसर्च है या उसका जो इम्पैक्ट है आप लोग को पता होना चाहिए. So evidence-based is very important. अच्छा, इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. Next is your brand and your business. Oh my God, this is I'm not sure of the dental schools in Pakistan because I have not really been part of it a while. But I have worked with Singaporeans, I've worked with Britishers, I've worked with Americans, and there's one thing I realized working with Singaporeans. They are very good with business. They're very good with. They teach you business. They don't talk. Of course, they are clinicians. But they have business managers. They tell you how to position. They tell you how to run a business, which is a different science, and I want to touch on that in a bit. Why is it important? Your presence and approach is important. Why presence and approach? Because in 2024, modernity is all about TikTok. Now, hold on. Not the TikTok you guys watch. Unfortunate that TikTok has content which, of course, is not a high quality content. उसके अंदर वो हर किस्म की लोग हैं, लेकिन you guys are, I mean I'm sure you guys are much younger than I am and much younger than Dr. Naveed and our prestigious dentist. So आप लोग के पास एज है. इस दौर में सोशल मीडिया पे एजुकेशन बात करें अपने क्लाइंट से, अपने पेशेंट से, मतलब you need to be on the forefront for that. So your presence is important because attention is money. So your brand position and network is important. So there are 2 things which is takeaway. Modern dentistry. I'm just talking about modern dentistry. 2 things. Patient experience. Along with health outcomes. तो आप लोग clinical outcomes को मैं ignore नहीं कर रहा, लेकिन I'm talking to you from a very specific lens over here. You're not ignoring the health outcomes, but you need to create a great experience. Your patient has to give a 5 star. Google पे जाते review मिलता है, Food Panda पे review देते हैं.
कल आपको भी रिव्यू करेंगे लोग बहुत जल्द. I'm not saying next, I can bet in next couple of years, 2 years max, you guys will get reviews. And the whole entire world right now is becoming about personal contact, personal touch. It's about how I think of you, how I feel you, when I look at you, when I meet you, who are you? So वो जो personalization वाला element है, अब वो आ चुका है दुनिया में. तो branding, your personal personality is very important. Number two, invest in technology. Whatever you guys are doing in dental school, perfect. But you don't have anymore a reason not to explore what technology does. You don't have a good enough reason. So don't come and give me excuse. मैं तो ये सर सबको अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, don't give me excuse. आप YouTube के ऊपर अगर आप 2 घंटे लगाते हैं तो आप क्यों नहीं, like why are you guys don't know about 3D printers? Why? Because you have not tapping into that right resource. It is a global economy. The world has opened up. It is now accessible. No, the knowledge is out there. It's up to you what personality you hold and how you interact. So technology के ऊपर बहुत important है. I want to talk about it a bit. So your focus is on these two things. So this is my team in the US. That's Dr. Han, and that's our clinic. And if you look at him, that's an anesthesiologist sitting, handing right there. This guy. We are doing all on 4, but the reason I put up this picture is because I want you to read something. The best or nothing. What does it mean? Why did he write this? So in my experience working with him, I realized that how people follow excellence in the world. हम लोग आज भी स्टरलाइजेशन के ऊपर पूछ रहे होते हैं, भाई स्टरलाइज है, चेक सर्विस करा ली थी सर. हम आज भी कभी कभार इस किस्म की बातें करते हैं. They are talking about next level. So right, so the best or nothing is not the brand. It's his dream. So your leadership in your team is extremely important. When you stand up and you talk to your people, it's how the values you give to the people, and that values is what creates the team. So this was a great experience for me. I managed plenty of. When it comes to research, so this is my mentors, Professor Menton. He discovered the CAPH. Dr. Knight, ये King's College के हैं. Dr. John Doll, he is from Cary's camera research. He is the head. So this is the Caryology conference back in 2017, and my experience with research has been great because it taught me a lot. It taught me it taught me how to be critical about what I do. It gave me that sense. Research, unfortunately, पूरी दुनिया में उसका एक नशा भी है सर, अगर कह सकें, बिकॉज जितने पेपर्स आप पब्लिश करते हैं उतनी आपको इज्जत मिलती है, तो उसी से आप प्रोफेसर बनते हैं. उसके अंदर एक ये एलिमेंट है. लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने रिसर्च को इस तरह एंजॉय की बिकॉज इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी एंड आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू. ये मेरा कुछ रिसर्च है. सो दिस इज, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू गो इन इट राइट नाउ, बट आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू बिकॉज यू गाइस, आई नो यंग क्लिनिशियंस. So this is my work, and we were looking at, so this is a scanning, of course it's an SCM, and we're looking high lasers of how the lasers will replace X-rays in the future. So there's already a work going on. So if you look at this 3D imaging, so ये जो green areas हैं आपके सामने, this is infected dentine. Infected dentine जानते हैं ना? Right? The ones you need to remove. And then the red one is your residual dentine. And then right below is a scan. So you look at it, it's a cross section, and then we have ultra scan, and we have seen that how when we do the excavation, आप excavation करते हैं, excavation करते करते कभी कभार होता है कि excavation deep हो जाती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, pulp capping करते हैं, वो फेल हो जाती है, फिर क्या करते हैं, थैंक यू, फिर क्या करते हैं, रूट कनाल पे बात चली जाती है. ऐसे ही होता है ना. सो मॉडर्न डेंटिस्ट्री में क्या होता है, वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि कहाँ पे रुकना है. क्यों? वाई? बिकॉज यू कैन एक्चुअली सी द डेंटल ट्यूब्यूल्स ओवर हियर.
ओह माय गॉड, आई हेट दिस। तुम लोग टेक्नोलॉजी के ना दुश्मन हो, इसको सही चलाएगा। थैंक यू। सो ये टेक्नोलॉजी का आई मीन आई नो इट्स अ जोक कि मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरनेट वो बेचारे कह रहे सर इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। तो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन कब तक ये इंटरनेट नहीं चलेगा पाकिस्तान में, लेट्स सी, अल्लाह करे आगे सॉल्व हो जाए ये मसला। तो रिसर्च जो है ना, रिसर्च आपको आपकी पर्सनालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स इट गेट्स यू प्रेस्टीज, इट गेट्स यू ऑनर, इट गेट्स यू ऑल दैट। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑनर, आई वन सम गुड अवार्ड्स इन IADR, and this guy on the left is he's the president of IADR at the moment. He's been my professor, Professor Angus Walls, great guy from Edinburgh. Next slide please. Research and digital dentistry. अच्छा, अब मैं आपके पास आ जाता हूँ कुछ काम की बातें। जो डॉक्टर मधा ने जो बातें बताई थी वो I think it's millions of dollars. Now I want to talk about something very important. So if you look at three important things, anyone who's interested in digital dentistry, I know you guys are young, but say आप लोग सामने वाले जो digital dentistry में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं 2-3 important चीज़, आपने 3 चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। एक अच्छा इंट्राओरल स्कैनर, एक मिलिंग मशीन और एक 3D प्रिंटर। तो ये टोटल अगर आप ऑल्टरनेटिव या चाइनीज़ के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन कुछ 7 to 8 मिलियन का खर्चा आता है। बट द प्रोडक्टिविटी विच यू ब्रिंग इज़ फिनोमिनल। It just totally revolutionizes how you work because you're not using all those alginate and all those things. You're just quickly doing a scan, send it to the design team sends it to the printer, and tuck, there you go on the prosthesis. So that's where the pace is. But if you go to the big boys, मैं यहाँ पे किसी companies का नाम नहीं लिखे हुए because I don't want to promote, but if you go for the big guys which are German players, that can cost up to more than समझ लें 40-100 मिलियन, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल डेंटिस्ट्री करना चाह रहे हैं, इट जस्ट इन्वेस्ट्स, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन कुछ 7 मिलियन तक की है। लेकिन अब बात जो मेरे से डेंटिस्ट्री बहुत सारी बातचीत होती है, तो मैं पूछता हूँ कि यार अगर 7 मिलियन, तो ये आप लोग के काम की चीज़ें, इसको सुने, अगर आप लोग 7 मिलियन या 8 मिलियन अपनी डिजिटल डेंटिस्ट्री पे लगाते हैं पैसे, तो आप इसको रिकवर कैसे करेंगे? ऐसे ही है। जब मैं अपनी PhD कर रहा था तो मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो एंडोडोंटिस्ट थे, माइक्रोस्कोप का बड़ा कार्ल ज़ीस का माइक्रोस्कोप। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि पेशेंट नहीं पे करते। द रीज़न डेंटिस्ट्री इन पाकिस्तान इज़ अ वेरी लो क्वालिटी डेंटिस्ट्री बिकॉज पेशेंट बड़े जब ये कल्चर है, हम भी शायद, मैं भी शायद कभी कभार जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं, ऐसे ही है ना? करते हैं आप लोग बार्गेन या नहीं करते? तो वो भी हमारे साथ ये करते हैं। तो बात ये है कि अगर बार्गेन अगर होती है तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी जो होता है, आपका काम डाउन होता है। बट दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर द क्वेश्चन कम्स विच आई एम, इसको नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, जहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना गोल सेट करना पड़ेगा। मैं बिज़नेस के बारे में बात भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ नंबर्स। ये मैं आपके सामने एक नंबर रखा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 बिलियन आपने पैसे बनाने, 1 बिलियन रुपीज़। 1 बिलियन रुपीज़ कितने होते हैं? कितने करोड़ होते हैं? 100। तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर 100 करोड़ रुपए बनाने, मैं चलो कहता हूँ कि 2 करोड़ रुपए बनाने। पैसों के बारे में बात करना सीखें, बिकॉज पैसे आपको कोई बना के नहीं देगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, तो ये चीज़ सीखें। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ने 1 बिलियन बनाना है अगले 2 साल के अंदर, 3 साल में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने आप को मार्केट कैसे करना पड़ेगा। एम आई राइट? मार्केट करना पड़ेगा या खुद ही आ जाएंगे? नहीं आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर ओनिंग अ क्लिनिक, यू नीड टू नो हाउ टू गेट योर पेशेंट्स। So that means you need to invest in your marketing. You need to talk about who you are. You need to talk about your services. You need to talk about why they should come to you. Why should they trust you? Am I right? So that means that there needs to be someone who needs to plan the strategy. So the rule of thumb is this: किसी भी बड़ी कंपनी पे आप चले जाएं तो 1 to 2% of marketing budget of the revenue is basically your investment. 1 to 2%. मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव अगर मैंने यहाँ पे नंबर्स रखे तो ये तकरीबन कुछ 20 मिलियन बनते हैं। 20 मिलियन पर मंथ अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपका बेसिकली
कितने पेशेंट्स, 154 पेशेंट्स चाहिए होते हैं. अगर आपके 6.5 million rupees, if is your average cost of one patient, which is of course a lot. So let's say for example a minimum cost is 2 lakh rupees, 3 lakh rupees. You need to do your maths. You need to do your maths if you want to be good business. But again, not mix it with your being a good clinician, okay? कभी कभार ये होता है कि जी डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर जो हैं वो इंसान की सेहत के लिए काम करते हैं. मैं बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो रोज़ी भी कमाते हैं इससे. तो जब रोज़ी कमाते हैं तो उस पर बात भी कर लिया करें, सीख भी लें फिर, वरना या तो आप लोग किसी फिनोमेना में रहेंगे. तो इधर यहाँ पे बड़ी थिन लाइन आ जाती है कि आपका जो क्लिनिकल वर्क है और आपकी पर्सनालिटी, आपकी टीम वर्सेस हाउ मच यू चार्ज. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला टू इट एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू. 0.8%, लाख, 2 लाख रुपए, जो भी आपके जहन में, बट डू योर मैथ्स. द पॉइंट इज़ नॉट टू फॉलो दीज नंबर्स. द पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर मार्केटिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. So because business is important, you guys need to learn how to do business. Next slide please. Next slide please. So these are some of the budgeting plans जो कि हम लोग इस वक्त यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में. आपने CPC का नाम सुना होगा, click per cost per click. So you need to make a strategy to put up a social media. So without a social media, without an attention, it gets very hard. Next slide please. And that's a whole monthly budgeting plan. Alright guys, so this was a little bit about business, you and research. Thank you so much. If you have any questions.